Priyanka Priyadarsini. Please introduce yourself. Sir, First now, phone number, phone. yes, sir. Sir, I am Priyanka Priyadarsini Pati. My roll number is 314003. Priyanka Pati. Yes, ma'am. Priyanka Priyadarsini. 314003. Yes, sir. Three one 400 314. 314003. Sir, roll number किसी जगह का नहीं. वो लड़कियों की. मैं roll number रखा है. सब recording पे. अच्छा ठीक Okay, tell about yourself. I am Priyanka Priyadarsini Pati. I belongs to Ali block of Madhuban village and Kendrapada district, and I have completed my Master. Just unmasked. I have completed my post graduation in chemistry from Utkal University, and also I have done my bachelor's in education from Navakrishna Chaudhary College of Teachers Education, Ongole. And here I am preparing from civil service 2019. Are you doing any job now? No, sir, I am just preparing. So chemistry में चिकट नहीं. Yes, sir. You have got a series of hobbies: cooking, teaching, anchoring. Yes, sir. So, what is hobby? Sir, majorly I do teaching the No, students. I want the hobby. Define hobby. Define hobby. Sir, I think hobby is that thing that we have done in our free time or leisure time. If I get something for some free time, then I will love to do the things. That is hobby. So what is the difference between the hobby and normal work? Daily work. So in daily work, some works are there that we have to do, we must to do, and there may be some purpose to do. But in case of hobbies, I think it's from internal view, and we love to do the things. That's the difference today. So anchoring, you have mentioned the anchoring is one of your hobbies. Yes, sir. Would you please explain? Yes, sir. Anchoring is two types. Normally happens in two types. That is formal anchoring and informal anchoring. In our colleges or universities, we do formal anchoring in case of arrangement of official meetings, and in case of informal anchoring, we have done the stage that is in our annual function or shows. We do the stage anchorings. These are of two types of What anchoring. is the importance of anchoring? Sir- That somebody will come, either a dancer or a musician or a singer, will display his item. So in what way we think that anchoring is important? Yes, sir. Importance of anchoring is there. Yes, anchoring is a very essential thing because through the anchoring we introduce the act the student want to perform in the stage, and the students in front of us will give the some sort of idea that what type of performance is going to happen in the stage. Please name the four famous anchors of India. So there are lots of anchors, and in majorly from their in growing days there are many Bollywood film stars. Do you know Amin Sahani? Yes, sir. Amit Sahni. Amit Sahani? Amit Sahani. Sahani. No, sir, I exactly don't know. He was a great anchor. Philip song anchoring this year. Yes, sir. Binaga Gitmalare se କରୁଥିଲେ Amit Sahni. ସେତେବେଳେ ଗୀତ ତ ଆମର ମୁଁ ହଉଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ପରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଆଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର୍ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ସାର୍ କରନ୍ତି ଭଲ ଆଙ୍କରିଂ, and we have also actually sir I basically know the from new generation people those who are ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସର୍ଭିସ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। yes sir. କ'ଣ ତାର ଆଙ୍କର କିଏ? ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦିଦି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କରିଂ ସେଠି। What is
Catalyst? So catalyst is that chemical thing that remain itself unchanged and make to forward or change the reaction and itself remain unchanged. Give an example. In presence of hydrogen peroxide, there are lots of chemical reactions occurs, like in type of oxidation reactions that happen. What is the role of manganese dioxide? How does it act? Is it a Manganese? catalyst? Yes, ma'am. Okay, so it is chemistry. Yes. Your graduation in chemistry. Post graduation. Post-graduation in chemistry. Okay. What is anabolism and metabolism? Sir, metabolism means something the physical reactions that takes place in our body, or that may be the biological processes, and anabolism actually I can't It's a explain. process of metabolism is of two parts, so anabolism and catabolism. For building process, anabolism, catabolism is breaking down of processes. Yes, ma'am. I can't recall it. Say, he's a MSc in chemistry from Uttar University. I would say NC, Otto College, Jajpur University. Plus 3 NCF must be. ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଡି ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ Optional कौन अच्छे? Geography and psychology. Psychology. Okay. Geography is na? Yes, sir. ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି. What is agroclimatic zone? Yes, sir. Agroclimatic zone. Sir, these are the summation of agricultural and climatic regions which enhance the agricultural productivity, and there are number of agroclimatic zones that we found. Normally we found the areas like the humid temperature conditions and that is a tropical forest areas, and also there are dry deciduous forest areas, and these are major types of agroclimatic zones. What do you mean by drought prone area? So drought is the condition that is not presence of adequate rain. So in a drought prone area, normally the amount of rain is much more lesser, and these are normally found in the northwestern sides of India. What are the basic concept of climate change? Global warming and climate change. Yes, sir. Geography subject ଅଛି ତ ଏଗୁଡ଼ା ପଚାରି ପାରନ୍ତି. Yes, sir. So global warming is majorly the conditions occurs when there are a high rise in temperature. This is known as global warming, and in due to the global warming we faces the climate change conditions. Okay, tell me related to that. How do you link cattle population to global warming? Ma'am, with the increase of temperature and global warming, the cattle populations we can say decreasing, and also I said cattle population can be contributed. yes, yes, ma'am. From the cattle population or the livestock populations, they emitted the methane gas. Those are very much enhancing the temperature of globe. Yeah. Yes, ma'am. Okay. What are the 5 traits person should have to be a good administrator according to you? At first, ma'am, I will tell it will be the intrinsic motivation. Traits, I said. Traits. Psychologist, na? Yes, ma'am. Traits, psychology, personality traits such. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me that. Ma'am, I can't recall the particular traits now. Sorry. Any one trait? Extrovert, introvert, aggressive. Yes, yes, ma'am. Try to recollect. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको लिंक करी को एडमिनिस्ट्रेटर होगा कौन बताओ वो प्रकार ट्रेड्स है. Yes, ma'am. Administrator should be on not be introvert, and they should be socializable person, and Sometimes you have to be introvert. You can't be extrovert all the time. You are a good administrator, right? yes, You don't say पूरा straightforward कोई जन introvert हो बोलो. हम कहते हैं introvert हो बोलो. okay. Okay. What else?
Actually, I can't What remember. subject पढ़ी? Okay. How will you manage your stress at workplace? Stress मैंने other stress अच्छे काम को complete करे अच्छे time देते हैं. केमती करियो balance? मैम प्रथमे मु चेष्टा करी माने मोर काम कौन कौन अच्छी सेटा को गोटे माने लिस्ट आउट करिया पई मते यही काम परफॉर्म करियार अछि और ता भीतर जदि मोर निजर स्ट्रेस रिलीफ पई किछि समय मिलुछि देन मु जो काम कले खुशी ही पारुछि से काम करिया को टिके मझरे चेष्टा करिवि जेमिति कि गीत सुनिबा हो कि घर लोकन को सहित कथा बा हो एपली किछि काम करिया द्वारा टिके माइंड टिके स्ट्रेस कम हेइ थाए तो सेमिति किछि करी स्ट्रेस कम करिया को चेष्टा करिवि आ एम्फासिस देबी मो काम जोटा मु लिस्ट आउट करी सेटा को कंप्लीट करके एगुडा करबा Actual situation के बे just narrate where you have to explain your authority. कुछ लोग भूल काम करते. How did you convince him? प्रथमे चेष्टा करी English को English बच्चे. Oh, sorry, ma'am. At first, I will try to make convince through analyzing me that how why I have done these things. If I have done anything majorly mistakes, so I will apologize him that I have done, and you may excuse me or something. If I have done any minor things, then I will try to convince my upper official, and I will be the polite. So that's why. So the administrator, introvert हवा दरकार ना extrovert हवा दरकार? No, sir, not exactly to be introvert or extrovert. Should be create a balance between the introvert and extrovert. Situation ଯେମିତି demand Yes, sir. କରିବ, but always should be people friendly. Yes, sir. ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ ଆମେ Yes, sir. should be people friendly and good. Yes, sir. तालिबान कौन माने आजकल बहुत से विषय कथा करती कौन से डाल? So तालिबान वर्ड एक्चुअली गोटे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन रो वर्ड रो आसी तो धीरे धीरे से जिनसटा जिते से माने आम नॉर्मली ताको नक्सलवादी बोली गोटे एनालिसिस कर भाभी दौरान बट से गोटे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते तो किसी प्रेशर अराइज करके से निजर वे रे निजर तांको रिलीजियस एक्टिविटीज रे तांको देश को से चलैबा चाहूले तो सेठू तालिबान सृष्टि होता बट धीरे धीरे से जिनसटी 2001 रु जितेबले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जितेबले अटैक होता ओसामा बिन लाडेन तो से केस रे अमेरिका जितेबले इंटरफेयर करी ओसामा बिन लाडेन को खोजिला बेले तो से इंटरफेयर करते से आसिकी तो सेठू अमेरिकार ट्रुप्सटा तालिबान ने रही आसी जोटा कि तालिबान माने रिसेसिव हो जाते से टाइम रे तो धीरे धीरे जितेबले यूएस माने पलैबा माने पलैले से देश छाड़िके तो सेतेबेले माने तालिबान माने टेक ओवर कर देले अफगानिस्तान में चाहे Is it a terrorist group? No, sir. Or violence means adopt करते कि? No, sir, they are not particularly terrorists, but they want to try to try to create pressure on the government and try to achieve their goals in their religious manner. Religious manner का तो Muslim fundamental Yes, Islamic rules. Islam fundamental. सेटा कौन से तालिबान कौन देश रे से माने छुट्टी है? Sir, exactly I have no idea, but it's से देश संगे भारत रे की संपर्क है? Sir, Pakistan, Afghanistan, I don't know. So, India have a relationship with the neighboring countries. So, I think India has also may have their relationship. अफगानिस्तान चलो अफगानिस्तान अफगानिस्तान में स्वयं से ऑपरेट करते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं Yes, sir. जे अफगानिस्तान कैपिटल की Kabul. अच्छा अफगानिस्तान में से जो काबुल का पुरातन नाम कौन था हिस्टोरिकल नेम Sir, I don't know. कंधार Yes, sir. अच्छा ओडिशा उठे कौन ओडिशा गोटे राज्य राज्य
अच्छा केटा मंडल विभक्त कर आज्ञा केटा मंडल विभक्त कर 314 314 थे डिवीजन मान मंडल माने डिवीजन कथा कहूँ आज्ञा केटा डिवीजन ओडिशा तुम ओडिशा एडमिनिस्ट्रेशन में जॉइन कर ना तुम जाने दरकार से 300 केटा डिवीजन अछि ओडिशा 314 हां 314 ताले ताले केटा ब्लॉक अछि ओडिशा रे ओ सर ब्लॉक एक्चुअली 314 ब्लॉक अछि यस डिवीजन होछि तीन टा डिवीजन है ना आज्ञा तहसील होछि 317 आज्ञा राष्ट्र जाने वाला सब साधारण Administration हो basic info. এটা তখন ওড়িশা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে জয়েন করে যাচ্ছে না आज्ञा তো ম্যাডাম তালিবান উপরে ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାରି ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଯାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି आज्ञा କିଏ ସେ से फार्मर्स लॉ रो प्रोटेस्ट करछन ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତିଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ତାର କେଉଁ ମାନେ ଭାଗକୁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି से प्रथम कथा भारत सरकार थिले आमर मंडी सिस्टम जोटा रही तो मंडी सिस्टम को से माने कॉर्पोरेट मानकर एंट्री कर देवा को भारत माने चाहूचंती ताकि प्राइवेटाइजेशन करबा पई तो कृषक माने से जिनसटा को टिके माने विरोध करूचंती माने मंडीटा को प्राइवेटाइजेशन न करबा पई आउ एमएसपी जते बेले भी प्रथमे सेटा पास करा गला बिलटा କ'ଣ ଶବ୍ଦ एमएसपी କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ଆଚ୍ଛା ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ୟୁନିୟନ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ଟା सर्वनिम्न आधार रे मूल्य निर्धारण ଆଚ୍ଛା तो सेटा He's confident. अच्छा ठीक अच्छी तापर ଗୋଟେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ କିଏ ସେ ବହୁତ ବାହାରୁ ସବୁ ଖବର କ'ଣ ଅଛି କିଏ ସେ से जने पारालंपिक रो एथलीट जे कि बैडमिंटन ने गोल्ड मेडल पाइचंती जोटा कि टोक्यो ओलंपिक्स ପାରାଲିମ୍ପିକ କ'ଣ ଅଲିମ୍ପିକ କ'ଣ ତା ତଫାତ କ'ଣ ओलंपिक इज फॉर नॉर्मल पीपल्स एंड पारालंपिक्स फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल्स मानक पई ମାନେ ଜେନେରାଲ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନେ यस सर कौन सी एक जोटा कि हमको से मानक हमें दिव्यांग बोली कहउचंती बस स्पेशली एबल्ड से मानक पई ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାତ ପଚାରି ଗୋଟେ ବାଜି ରାଉତ କି बाजीराउत सर ढेंकानाल जिलार भुवन ग्रामर जोड़े छोटिया बालक 8 वर्षर जी कि सेते बेले गोटे नाउरीर पुओ थिले एवं नाउरी डंगा पार करिवारे लोक मन सहाय्य करुथिले तो प्रजामंडल गठन पई जेते बेले सरकार माने आसीथिले एवं तांको कहिथिले कि नदी पार करदवा पई बाजीराउत संपूर्ण रूपे निडर रूपे मना करथिले जे मु आपण मानको डंगा पार करि परिबिनी कारण आपण गले माने आम माने लोक मानक प्रति क्षति सृष्टि करूछंती सेथिपई से डंगा आनी नथिले तो इंग्रेज मानक गुली रे से मृत्युवरण कर जायथिले ବାଜିରାଉତ ତୁମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରେଇଲା ଦି ଜଣ ବାଳୁତ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଜିରାଉତ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମପଦ आज्ञा 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 ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରେଇଲା ଦି ଜଣ କବିତାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରେଇଛନ୍ତି नहीं नहीं सर बाजीराउत जनकर अच्छी मोर ସଚି ରାଉତରାୟ ସଚି ରାଉତରାୟ ବାଜିରାଉତକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରେଇଲେ Yes, sir. ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଧର୍ମପଦକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା, କରେଇଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଧର୍ମପଦ କାବ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ଫୁଲ୍ କାବ୍ୟ ଅଛି आज्ञा ସଚିରା ଉପରେ ଯଦି ବାଜି ରାଉତ ବିଷୟରେ କବିତା ଥିଲେ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟା आज्ञा କିନ୍ତୁ ଶହୀଦ ଗୁଳି ଛାତି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ସିଏ ବହୁ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କେମିତି ରହିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ 19 रे मोर बीएड सरला परे प्रिपरेशन करछि खाली माने पढ़ा 19 सर अनुकूल कॉलेज रे आज्ञा ଏ
बीएड करे एमएससी कलम ना एमएससी फर्स्ट 17 ରୁ 19 करके यू प्रिपेयरिंग व्हाई डिड यू जॉइन इन टीचिंग प्रोफेशन मैम मु टीचिंग पिला मन को अप्लाई दिस टाइम बैचलर एटा OSST and all those exams yes I have qualified OSST and CTET also in my why not in teaching profession I'm actually in administration during my education period, my BEd time, I have just think about to do something bigger or do something in a wider platform, that is in administrative line, because in my childhood there is some instinct that remind me about my childhood. So I think if I would be able to serve the society in a better or a wider way, so why not I join? So that's why I take the decision during my studies. Then help the society is a wider way, means you when you make people literate, that is the most noble profession. Yes, ma'am, of You course. can bring out all kind of changes when you Yes, are bring out education development. Yes, So why can't you do that way? That also you can help the society in a wide way. yes, ma'am. Through education, I can serve the people in a wider way, but not through. I don't want only go through a monotonous way like education. I also want to Be serve. specific, say there are diverse opportunities, Yes, sir. challenges which I will Yes, ma'am. think I can. Yes, ma'am. Okay. You had education subject. Yes, What is educational psychology? Education psychology is the branch of psychology that majorly deals with the educational procedures and behavioral change to interact with the students and to study their mind, and in order to teach them in a better way. What is learning? Learning is a lifelong process, and we have some procedures through which we can take the learning, and it's about to acquire something and to analyze it in mind and implement it. What is transfer of knowledge? Transfer of knowledge is something to share the knowledge from one person to another. What are different types of transfer? Like so, by profession or by heart, I am a teacher, and if I want to teach the students or the opposite people in front of me, that may be the transpiration. The teacher and pupil, well, teacher and student. Types of transfer? Yes, ma'am. Types of transfer of knowledge. Ma'am, it may be for formals and informal types of transfer. That is exhibition, formal education, non-formal, informal education. Types of transfer. What is zero transfer? When a knowledge which you gain in one subject has no relation with the other subject. Yes, ma'am. साइकिल सीखले तुम स्कूटर चलेगा कि तमें कार चलेगा बट गोटे एमती नॉलेज कि आ सनी तमें रिलेशन नथियो बट लर्निंग होछ Okay. दैट इज जीरो क्लास ओके ओके सर You have mentioned that university level chancellor's debate competition runners up. Yes. In which university? Utkal University. Chancellor's debate is in English, in English debate Yes, competition. yes, sir. What is the name of that first prize? It's given to the Chancellor's debate competition. First prize is Chancellor's Cup, Yes, and second prize is Vice Chancellor's Cup. yes, sir. Only Chancellors. Yes, You were the Vice Chancellor's Cup. yes, yes, You stood second. yes. Who stood first? It's a student named as Devendra Panda. Yes. So why you secured second position? You should have secured first position. Yes, sir. I What saw. was the topic? Topic कौन था? Sir, Debate competition में. से टॉपिक थिले कि देशर अर्थनीति सुधारिबारे स्टूडेंट्स छात्र मानकर भूमिका. ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଆ ଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ सर इंग्लिश नो सर. यस सर. ଇଂଲିଶ ଏଇଟା ପିଲା यस यस सर. କ'ଣ ସେଟା କହିଲ? Majorly it's actually sir particularly topic I can't recall it, but it's about the majorly the role of students
in bringing the economical or prosperity of society. Something that. गोटे भल डिबेटर हवा पे गोटे कौन 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 गुण थिया दरकार से प्रथमे भल डिबेटर होगापी सब्जेक्ट जोटा आमको दि जाऊँगी विषय वस्तु सेटा को बुझा दरकार एवं विभिन्न प्रकार कोणरू आम एनालिसिस करा दरकार और तृतीय हूँ आम उपयुक्त भाव उपस्थापना कर दरकार उपयुक्त उपस्थापना कथा कौच क्या द्वारा सेमती उपयुक्त उपस्थापना हो पार कौन कौन कहले उपयुक्त उपस्थापना हो पार सर जितेबाला प्रथम जपरी कहली विषय वस्तु को बुझा और भल भाषा प्रयोग करने सहित भल शैली रे उपस्थापन करने को कहीपर उपयुक्त उपस्थापना उद्धृति दिए जितेबाला वक्तृता प्रतियोगिता उद्धृति गोटे नॉन गोटे अहिंसा उपर आसला महात्मा गांधी कही अहिंसा परमांश परम धर्म उद्धृत कर कोटेशन तो इंग्रेजी को उद्धृति को उद्धृति दे कंपटीशन डिबेट कंपटीशन में आज्ञा सर एटा प्रथमे आरंभ रे किबा शेष रे हमें दे परिबा मझे भावे सब विषय वस्तुटी को बेसी एनालिसिस करवा ऊपर आरंभ शेष भारतीय गणतंत्र सफल कि विषयटी तुमको दिया गया हां तो तुम केमती कोन ताको प्लानिंग करियो तुमको घंटा दिया हो विषय ए विषयटा दिया गला भारतीय गणतंत्र सफल कि जदि तुम दिया गला तब तुम प्रतियोगिता को जीवा आगु तुम कौन केमती कौन प्रस्तुति करियो सर मु प्रथमे देखिबी मु यार विपक्ष रे कि सपक्ष रे कहबा को चेष्टा करूची तो प्रथमे जदि मु हाँ सफल बोली भाबी सपक्ष रे तो ता संपर्क रे मु समस्त जुक्ति जहाँ भी हेई परिबो तो जुक्ति मान सब पॉइंट आउट करिया को चेष्टा करिवे तापरे ताको जेपरि आपण कहिले उद्धृत देकी गणतंत्र हेउची जेमति हम अब्राहम लिंकन कहितले गणतंत्र हेउची लोकमानकर द्वारा एवं लोकमानक पई एपरि किछि कहि आरंभ करिवा सहित जो माने हमर अतिथि माने थिबे कि आयोजक वृंद थे से संबोधन कर सारिबा परे निजर वक्तव्य सविरण भाव मु सपक्ष कि विपक्ष कहूँ सेटा जन सारिबा परे मोर वक्तव्य आरंभ करने को चेष्टा करेंगे को क्रम रे कहबो सेटा मन रे ताको ठीक करके रखिया पड़ियो ना नहीं यस हां सर जेतोल कहला नहीं सर एटा रखिया को पड़िबो एवं धीरे धीरे प्रतियोगिता रे भाग नेले एटा ऑटोमेटिक माइंड रही जाय जेहेतु तो किछि दिन सर अरेंज होइनी बट किंतु रखिबा को पड़िबो ए जिनसटा मन रे रखिया पड़ियो या पर या आज्ञा आज्ञा आ गोटे बड़ जे भलो सफल जे डिबेटर से तार आ गोटे जिनस प्रति से कॉन्शियस होवा दरकार आज्ञा को जिनस प्रति सबुठ बेसी माने सचेतन हो कॉन्शियस हो प्रथमे निजे कोन कहूची से विषय रे जानिबा ए सहित भाषाटा बेसी तो बहुत जानछि कहि आज्ञा मु तो बहुत जानछि जो हम विषय वस्तु जा दिया जाई से विषय रे कहिबा हाँ विषय वस्तु पर बहुत सेटा भाषा एवं शब्द संचालन जो जिन अपन सिलेक्टेड आज्ञा बट फॉर इंटरव्यू ट्रेडिशनल स्टडी में दी जो पड़ो यस सर तू निश्चय सिलेक्ट हो तू सिलेक्ट ही हो निश्चय पाइबो ऑप्शनल लिख जाओ बाकी मिक्सा बच्चे ऑप्शनल हमने बच्चे को टाइम नंबर पाई पॉजिटिव बच्चे आ के न्यूज़ पेपर देखियो आज्ञा डेली गुटे इंग्लिश पेपर गुटे ओडिया न्यूज़ पेपर देखियो आज्ञा सर आ ओडिसा रो टूरिज्म ओडिसा रो कल्चर हिस्ट्री दिगे आ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को ड्यूटी कोन आज्ञा जेतोटा सिविल सर्विस अछि आज्ञा सिविल सर्विस तीन चार जिनिस अछि आज्ञा फाइनेंस सर्विस अछि पुलिस सर्विस अछि और रेवेन्यू सर्विस अछि ओएस अछि एडो जो बेसिक ड्यूटी टा कोन फॉर व्हाट यू विल बी फिट जो डिमोनेटाइजेशन कथा कहला कि जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की करिवे स्टूडेंट माने आज्ञा सेटा विषय पॉवर्टी
केमते पवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हे करिवो कि पवर्टी दूर हे करिवो ए सब जिंस सब विभिन्न प्रकार पचारे What is the role of counselor? Okay, sir. Role of duty of counselor. Majorly Tahsildar, Video and counselor difference what? majorly BDO is known as Block Development Officer, whose major work is to do the developmental works, that may be like construction of bridges or any type of developmental works. And in case of Tahsildar, he is a person who collects the revenues and also have the executive powers also with Tahsildars. Executive magistrate. But he is actually in charge of all the land records within the Tahsil. Yes, sir. So land records ja achi, tara map, land records, ROR, record of rights. Yes. This सब गुड़ा को सीधा इधर था. Custodian of government land as well. Yes. Government, private, both land. Yes. Hello. Yes. So thank you, madam. कुछ पूछेगा. Okay, last question. Yes. Can you do the anchoring to start for the mock interview? Yes, ma'am. Shortly, maybe. Yes, ma'am. नमस्कार दर्शक वृंद, वर्तमान आपण मैंने जपरी एठारे उपस्थित अच्छा आपण मैंने जानी थे आमे मैंने एठारे अच्छू एक गोटे मॉक इंटरव्यू अरेंज करने तो आम गणरे वर्तमान उपस्थित होबाकू जाउछंती जने जनाशुना दक्ष प्रशासक डॉक्टर नायक सर and Dr. Patti sir and our most energetic ma'am, Dr. Mishra ma'am. So आमी से माने को sorry ma'am, I actually don't know. Mishra तो कौन है? Mishra? No, सागरी करो. हमरा सागरी करो. See if the माने mock name. Everything is mock. Okay. So आमी से माने को करताल देकी स्वागत करिबा एवं वर्तमान हमारा इंटरव्यू स्टार्ट करिया चेष्टा. Thank you so much. Okay. Your positive point is you're not nervous at all. No. Only balance करछो, body language is okay, everything. Answer भी भलो कि दोछो, clarity है सब किछ ठीक ठाक. Only thing optional we could not judge you. Time पे ठीक है से भलो लिखा. Yes ma'am. Okay, and proper attire. Yes ma'am. हमरा जने सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे. Okay. जे कि केमिस्ट्री पचारे. Okay. और ज्योग्राफी पचारे. Okay. दूसरे सब्जेक्ट का नहीं किसी तरह पता नहीं हो. Basic से देख लियो, otherwise your personality wise. Thank you. All the best. Thank you, all the best. Anything you want to ask? इस पचारे कुछ आपको एडवाइस. सर एडवाइस गोटे जिन सर माने माने बाई पर्सनालीटी आम एक्चुअली माने केमिति हवा दरकार एडमिनिस्ट्रेटर में मैम जो कथाटा कहले कि एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट भीतर एक्चुअली से जिनसा भी माने माने जो जगह रे तमरा एक्सट्रोवर्ट हबा कथा सेठी हबो के जो जगह रे एक्सट्रोवर्ट भी परियो को लाइक फील्ड रे जत नो नहीं उसे जगह चेक सब करो जगह पे इंट्रोवर्ट है वेरी गुड. जो तो यू टू स्पीक समथिंग, एक्सप्लेन समथिंग, लोगों को एजुकेट करवार अछि. यस सर. the program आसी. यस सर. बागुटे ओपन एम्पावरमेंट ऊपर गवर्नमेंट प्रोग्राम स्पॉन्सर करछि. यस सर. सेतरे से वीडियो बा लोकल तहसीलदार बा लेडी अफसर जे अछते से माने किसी डिलीवरेट करबे. यस सर. And they will motivate the people. सेठी अब एक्सट्रोवर्ट नहीं इंट्रोवर्ट ले कोन हो मोर पार्टी मोर भाषा बारे में केते हो. इंट्रोवर्ट के तरह भीतर को इंट्रोवर्ट जिते किसी माने बाहर मानकर जो बहुत गोटे मुव हो जाऊँ माने लोक मैंने बहुत ही गंडगोल हो तो फिर तमे से रिएक्ट करछन तमे रिएक्ट करियो नहीं हम से मैनेज करियो. ओके हम बेस्ट करंट अफेयर्स गुड़ा जो होला देखियो. आज्ञा. हां. आज्ञा आज केबे अछि जो 28 हैं 28 रे. आ ता भीतर सब सब है. मैं वाले सब्जेक्ट देखियो. सब न्यूज पेपर देखियो. ऐसा हिस्ट्री के देखियो, जियोग्राफी से तो अछि जियोग्राफी देखियो, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, आज्ञा. एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ओडिशा रा जो विभिन्न फॉरेस्ट रेंज अछि बा अत्यंत सब रही छी. फ्लोरा फौना नेचुरल रिसोर्सेस सब गुड़ा कटिके देखियो चिलिका व्रत जो गुड़ा अछि बा अत्यंत नेचुरल हैबिटेट अछि. ए गुड़ा कटिके देखियो बिकॉज़ यू हैव जियोग्राफी
they may ask any question on such subjects. I mean, specifically touch करूँ शकता. Yes, sir. Broadly कर दे. Okay, sir. But you will be selected. ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ବି ଭଲ ଅଛି ଧର୍ମ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା। ସବଜେକ୍ଟ ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ପ୍ରିପେୟାର ହେବ କେତେଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଇଣ୍ଟରନାଲ ନେଇଛୁ ନା No, the faster. ହେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ. Okay. ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସ୍ତେ ସବଜେକ୍ଟ ପଚାରିବି ପ୍ରିପେୟାର କରିବ Yes. କ୍ୟାରିୟର Gracias.